Hello and a very warm welcome to you all. I'm Vikas Nangia with Focus Live Season 4. Ladies and gentlemen, my guest today on the program is someone special who joins us from Boston, Massachusetts. She's the award-winning poet, film writer, lyricist, and an author, Sunayana Kachroo, Bhide. Sunayana, thank you so very much for joining us on Focus Live Season 4. Thank you for having me today. And I'm joining from Boston, and you're in New Jersey, but I think technology has made it possible that everyone is just a thought away. Absolutely. And a thought away is also, especially when your fans, your readers who enjoy your poetry, there's a connection up over there. So that also, whatever part of the world you are in, as long as people enjoy your writings, they enjoy what you've written, creatively, there's a divine connection over there as well. So I think technology is at one end, but the other end is your writings that, excite people, and there's a divine connection over there. So Nana, I'd like to begin the conversation by congratulating you for your new book, Sunny Side Up. The book is already making a lot of buzz. I understand that you were also invited in Capitol Hill, Washington, D.C. to recite some poems over there for Kashmiri Pandit diaspora. Before I really talk about the experience of being in Capitol Hill, I just want to first understand what the book is all about, Sunny Side Up. Yes, thank you so much for having me again. And thank you to all the viewers who will be seeing this program. The book, actually, my first book came in 2013. The name of that book is Waqt Se Pare Beyond Time. And there was a gap in between where I have continuously been writing for films, poetry, reciting, short stories. It's just that I never got time to get it all together. I was actually working on my Hindi-Urdu poetry book. And that was almost 90% complete. And what I did was I sorted the English poetry out of that to get it out of my way. But I think fate and destiny had other plans. When I looked at that book, somehow that appealed to me much more. It spoke more to me, and that all came together. Somehow it all came together. I can't even explain it. The Hindi book went to the back burner. It decided jumped to the front burner. I said, "Hey, I'm ready. Take me." Right. So that is how this book came about, and all the poetry that I had been writing, English poetry over the years, for the last probably 9-10 years, that's all in this. And I then looked at it, if there was a theme, if there were chapters in it. I also have some short stories that I initially thought I'll probably write more of those, but it stopped at 5 and 6. So those are different scenes from Ramayana and Mahabharata that I have reinterpreted. And there's a very short story. Some of those are like 4 or 5 lines, and some are half-page long. So that is how it all came about. It was supposed to be published in 2019. And then it got delayed, and I think this is the time for all of us to, हमारे पंख तैयार हो रहे हैं अभी उड़ान के लिए after the COVID era. So I think the time was right to get it out. So Nana, I also want to congratulate you for the fact that you write in 4 different languages. You've written extensively in Hindi, Urdu, Kashmiri, and now in English as well. You've been writing, as you said, for all these number of years, and you were waiting for the right time, and perhaps it is here now for all of us to read and enjoy your writings. And you said, let me reiterate for our viewers that it's poetry and some short stories as well. And you have those references from from mythology as well. You said Ramayana, and you bring in some reference. So let me just, before I really talk about the poetry, I want to understand these short stories. क्या है इन शॉर्ट स्टोरीज में, मतलब उसका कुछ मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन है या किस तरह की ये शॉर्ट स्टोरीज हैं? I can probably read one. It's a very short story, and the interpretation is obviously, I wouldn't call it modern. I'll just say, because what is modern, right? It's just that this is my interpretation right now. Maybe somebody who had interpreted it earlier may be much more modern than what I have interpreted, but these are my interpretations. And I can probably read this. There's one which is called Sakha, My Special Friend. It's a conversation between Arjun and Draupadi. So the premise that's from Mahabharata, basically. Mahabharata, right. So the premise is that Draupadi has this intellectual connection with Krishna.
where they keep talking on and off. And Arjun is kind of troubled by that. And this is where they talk to each other. Hmm. So Sakha is how Draupadi used to address Krishna. Hmm. Sakha is just a special friend. Why do you feel jealous? Asked Draupadi. Why do you feel jealous? Asked Draupadi. Arjun replied, well, I was hoping to be that friend in your life, an intellectually stimulating companion and a passionate lover too. Even though Krishna is my guru, yet I feel envious that you consider him as your comrade and consult him in the matters of the heart. Draupadi looked at Arjun with admiration and adoration and said, why do you always assume that it is a woman who seeks a man's counsel? She paused for a moment and then declared, I do not seek Krishna's counsel, he seeks mine. Areva, beautiful, beautiful. What a thought, and what a friendly way that you've put this together. Obviously, I want to ask you, where have you gained inspiration for writing these beautiful short stories? And I'm sure you must have yourself done some extensive research on reading the Mahabharata and Ramayana. So yeah, walk us through all that creative process of yours. The creative, if you, I call it a crime scene actually. If you go and see somebody's creative process or their desk of a writer, if you go to Gulzar Saab's home, it is where he reads, where he writes. It's full of books and you have to kind of उसमें ढूंढना पड़ता है उन्हें कि ये है कहाँ उसमें. So a creative, I'm not saying everyone is like that. I am very sure there are some writers who are very organized. It's just that that's not how I am. I actually sometimes find it very difficult to even focus on one topic. I'm actually, let's say right now I'm in a process of writing a song, as well as I'm in a process of writing a script. It's like we're doing a pass on a script. So I somehow juggle between the two, and I sometimes actually end up writing something else. So it's a very chaotic process, but it's like this hummingbird that keeps on going from one place to another. And if you look it from a distance, you'll be like, ye to pagal hai, ye bird, it has no direction. There is no path. What is your path? What is your destination? But, later I realized that no amount of creation is a waste. Right. It's just that when you attach some kind of attachment to it, that I want to write a book, I want to write the best poetry, does not work like that, at least for me. So even with this poetry, it's not that I thought that I'm going to reinterpret Mahabharata, I'm going to reinterpret this scene. I kept writing, I kept looking at various serials, various songs. There was a series by director Vikram Bhatt where he was actually writing short stories. I got inspired by that also. I started looking at all of these characters in a very different way. I realized they are not black and white. It's at the grays where you find beauty of life, because then there's nothing right and wrong. It's just, how you reinterpret it. So that, and then, Zindagi to ek bahut badi muse hai hi. मुझे लगता है कि a lot of people said that when plague happened, Shakespeare wrote all of these great epics. But I joked that Shakespeare did not have to cook for his family. So वो भी एक inspiration है, आप जिंदगी से जो जूझते हैं. जी, कलात्मक व्यक्तियों के साथ, ये कलात्मक व्यक्तियों के साथ बड़ा दिलचस्प एक मैं कहूंगा कि पहलू उनकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है कि एक साथ बहुत सी चीजें हम सोचते हैं और फिर ये नहीं है कि एक ही पर एट अ टाइम तवज्जो या फोकस चल रहा होता है, मल्टीपल चीजों पे एक साथ चल रहा होता है. और ये वही व्यक्ति ज्यादा कर पाता है जो प्रतिभाशाली हो और ऑब्जर्वेशनिस्ट हो. वो मैं देख रहा हूँ कि आपकी लेखन में नजर आ रहा है. यहाँ एक बात और कि सनी साइड अप में जो अंग्रेजी की कविताएं, पोएम्स जो आपने लिखी हैं, वो किस तरह की हैं? शॉर्ट स्टोरीज के बारे में तो आपने बताया, लेकिन ये पोएम्स जो हैं किस तरह की हैं? बिकॉज जब मैं आपकी जो दूसरी किताब की बात करूं, बियॉन्ड टाइम की अगर मैं बात करता हूं, वक्त से परे की बात करता हूं, तो अलग अलग जॉनरास की हैं. आपको कई बार कवि सम्मेलनों में भी मैंने सुना है, वहां पर भी अलग अलग जॉनरास की कविताओं को आप लेकर के आती हैं, सुनने वालों के समक्ष रखती हैं. तो सनी साइड में किस तरह की कविताएं हैं? Because sunny side, जैसे मैंने कहा कि these are like pebbles that have collected from the shores of life.
तो अब ये है कि आप उसे जब जमा करते हैं, आप तहखाने में डाल देते हैं, at some point when you're cleaning your basement, you look at this संदूक and you realize इतने सारे पत्थर हैं, इकट्ठे से घर तो नहीं बनेगा, but maybe मील का पत्थर बनेगा, right? A milestone can be created. So this book, is like a milestone for me. जिंदगी की रसीदें हैं, these are receipts of different things that have happened in my life. Right. But when I started putting it all together, I realized there were different chapters. And that's how I've divided it. I can, read out the chapters that I have. So I've divided it into different chapters. First chapter is home and homelessness, love, longing, and liberation, fight the fight, wanderlust, and healing. That's the final chapter. Interesting. And they all are very different than each other. Yes. And there are different themes, like even as a South Asian, we're living here as a mother of a South Asian child. There was a poem of mine which was actually published by Brown Girl magazine called My Brown Boy. It was addressed to my son. And then there are other languages I have a poem which is addressed to my mother tongue, and how I'm kind of losing it, and I'm getting anxiety thinking that someday I'll lose it all. Right. So there are those things which people who go away from home or probably live in a different country, जिनकी शाखें अब उनकी जड़ों से ज़्यादा बड़ी हो गई है, ऐसे कह सकते हैं. So right. It just to people like that. Yeah. So different chapters, of course, different phases of your life. As you said, you bring the poems from different shows, different parts of different phases of your life, and you've been collecting all these together. So this is exciting. I'm sure viewers would like to know, and in somewhat way they would resonate as well. I'm sure their stories, their poems while growing up, while living in India, while migrating to this part of the world. You've been living over here for over 2 decades now. So ये सब चीजों का समावेश जो है सनी साइड अप में पढ़ने को मिलेगा. So I'm really excited about that. I also want to talk about your experience at Capitol Hill. I understand that you recited some of your poems in front of the Kashmiri Pandit diaspora towards the end of 2021. You were invited over there. So what was that experience like, reading some of the poetry in front of your very own Kashmiri Pandit diaspora? It was actually surreal. When it was happening, I felt like, I'm part of a movie. When I was going through the corridors, I'm sure there are people who go there often, but it was first time for me. When I was walking through the corridors of Capitol Hill, I was thinking about all the people before me, my ancestors, people that have inspired me, people like yourself, all the people in the world that have touched me, and my creative, have given me, have opened doors for me, have opened windows for me. I was thinking of all of those people. मैं हाल ही में जब किताब की which was released in India, तो I said that मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ दिनकर की 5 कविताओं का सत्तू भी था, गालिब की के दीवान का दोशाला भी था, उसमें माया एंजेलो भी मेरे साथ थी, क्योंकि इन सबको पढ़ के हम आगे बढ़े हैं. मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर भी थी जो she was in 1947 October she was killed. So I keep thinking about her, and I'm thinking if that would not have happened, I wouldn't be here, because I'm carrying all of that with me. So जब भी आप पे रोशनी पड़ती है कहीं पे भी जिंदगी में, तो मैं काफी पीछे से आई हूँ. मैं जीरो से स्टार्ट नहीं किया, काफी पीछे से स्टार्ट किया, और पीछे से ये सब लोग हैं. तो somehow I was just thinking, I was not thinking about what I'm going to read. I was thinking and looking at all of that through the eyes of all of these people. इंटरेस्टिंग. अब जैसे जैसे आप बताते जा रहे हो, एक क्यूरोसिटी और बढ़ती जा रही है मेरे मन में सनी साइड अप की जो पोएट्री है आपकी, उसको पढ़ने के लिए, शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ने के लिए. और यहाँ इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, 2 सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एज अ राइटर हु इज मल्टीलिंगुअल, हु राइट्स इन हिंदी, उर्दू, कश्मीरी एंड इंग्लिश, when you get on to writing something, what's the first thing that comes to your mind? What's the first language that you conceive a story or you conceive your poetry in? कुछ natural होता है ना, जैसे मेरे साथ अगर कोई बात करे तो natural जो मुझे आता है वो हिंदी में आता है, because वहां से ही मैं पला बड़ा हूँ, उस माहौल में रहा हूँ. And then maybe this next thing would be English, and the other languages, maybe Punjabi or so, despite being the fact that I'm a Punjabi, but Hindi comes more naturally to me. Then English, maybe Punjabi or so. So the question is, you as someone who was, who's lived in
different parts of India, and then now over here, what comes more naturally to you? That's a great question, Vikas, but it also depends on if I'm writing poetry, then that is a different process. But if I'm writing for characters in a film, then the language is of the character. जैसे कहते हैं कि अगर कोई हाई राइज में रहता है तो आप उसके लिए मैं तुलसी तेरे आंगन की नहीं लिख सकते, because that doesn't work for, that's not their language, even if I may want to write that. So the language of a character I have to make sure when I'm writing poetry. Like हम लोगों ने एकल के लिए जब गाना लिखा था अनुराधा पालाकुर्ती जी के लिए, तो the brief that was given to me that make sure you use the artifact. देखिए वो तो मैं समझा, जब आप एक सिचुएशन के लिए लिख रहे हैं, एक थीम सॉन्ग लिख रहे हैं, दैट इज obviously, but obviously it's a different thing, because you are keeping your thoughts confined to a certain area, एक दायरे में रह करके आप लिख रहे हैं. But when it is an open hand, when you have to write something and you have to express your emotions, what comes more naturally to you? Which language do you conceive and write in? It actually, thought comes in its own language. At least that's what happens to me. Interesting. And sometimes I've tried, that's why when I'm trying to translate my poetry in a different language, for example, I have a poem in Kashmiri which is actually on the arrival of spring. I was trying to translate or transcreate it in English. It just didn't work for me, because what I had actually tried to create in Kashmiri could not be recreated. So I gave it to someone else and said, hey, can you translate it for me, even though I can write in English. So for me, at least, that's how things work. When I'm in a different zone and I see a flower, I'm thinking, what's the Kashmiri word for it? And then, it starts. And a poem is chasing me, कि अभी इतनी दूर आई हो तो आप मुझे लिख ही डालो. Sometimes I'm driving a car and I'm talking to a poem, I'm like, find someone else. I'm driving right now. So true. It happens with all of us, it happens with all of us. This is interesting. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार सुनैना काचरू भिड़े के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. सुनैना, you be with us, viewers, you stay tuned. We'll be right back after these messages. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत. आज मजेदार दिलचस्प बातचीत हो रही है सुनैना काचरू भिड़े के साथ, बॉस्टन बेस्ड अवार्ड विनिंग पोएट, फिल्म राइटर, लिरिसिस्ट, ऑथर. ब्रेक से पहले हमने उनकी नई किताब सनी साइड अप के बारे में बातचीत करी. सुनैना, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत. इसी शिद्दत से 2 दफा आपका और मैं आगे स्वागत करने वाला हूँ. मुझे तो ये लग रहा है कि जब कुछ दिनों पहले मैंने विमेन एम्पावरमेंट वीक किया था, एक्चुअली डे नहीं किया था, और उस दौरान मैंने अलग अलग क्षेत्र की विद्वान या कहूँगा प्रतिष्ठित विमेन अचीवर्स से बातचीत करी थी, तो कहीं लग रहा था कि उस वक्त चलो सुनैना को भी बात कर लेते. लेकिन उस वक्त बतौर ऑथर वी हैड चित्रा देविकुर्णी. शी जॉइंड अस फ्रॉम I'm a big fan. from Houston, Texas, and she writes phenomenal as well. Absolutely. पर चलिए, जब मौका बनता है, मुझे लगता है सनी साइड आपको लेकर के this is the right moment to have the interaction with you. कुछ बात अब आप, जैसे मैं आपसे जो सवाल किया था ब्रेक से पहले कि किस भाषा में पहले सोचते हो एक कहानी, एक शायरी को या एक कविता को लिखने के वक्त, and you said that the mode of the language comes naturally when you conceive. It's not that you decide, but the poetry decides what language you want to write in. Absolutely. So उसी को ध्यान में रखते हुए जब उस सवाल का जवाब आप दे रहे थे, आपने मुझको कहा था कि जब दायरे में लिख करके आप लिख रहे होते हो, then obviously your mindset is just focused in that area. You brought the reference of Ekal Vidyalaya, the song that Anuradha Palakurti had sung, a beautiful theme song. एक तो इस एकल विद्यालय का जो एक एंथम सॉन्ग बन गया जो आपने लिखा, उसके बारे में पहले कुछ जान लो. कुछ करने की चाह है, बस राहें दिखा देना, आज नहीं है पर अपना एकल होगा ना. So अपना एकल होगा ना, अपना एक कल होगा ना, that's the theme. And I'm a big supporter of the work that Ekal does. Education, my parents are both
from that education department. They were educators. So ये education एक बहुत ही close है to my heart, and it was commissioned project by Anuradha ji and Prashant ji, and we had this wonderful conversation where the brief that was given to me, as I said earlier, was that कि जो artifacts गांव में मिलते हैं उसे लेकर ही गाना बनाया जाए, कि मैं ऐसी कोई चीज का रेफरेंस वहां ना दूं जो गांव में ना मिलती हो, because then it will become something that is not relatable, because we're writing for children. So I tried to incorporate that in that song कि ये चांद हर रात आता है गाँव में, सपनों की मिश्री ले आता है छाँव में. तो उस तरह की पायल, घुंघरू, सब मिश्री, रात, चांद जो बहुत ही easily relatable हैं, ताकि जो गुनगुनाए. देखिए गाने का एक मुझे लगता है कि ये है कि वो जो आप एक छोटा पत्ता छोड़ देते हैं ना झरने पे, तो कैसा सटली बहता है, पर वो बहता है साथ में पानी के. शब्द ऐसे ही होने चाहिए धुन के साथ, कि वो ऐसे अलग रहे, साथ में दिखें कि अलग हैं, पर वो साथ रहे एकदम, they should be together. So that is how that song came about, and it was well received as well, and it gives me great pleasure. Just the thought that there are these millions of kids, they don't know who I am, but they know the words. है ना, जैसे कोयल का हम कहते हैं कि हम कोयल शायद हमने ना देखी हो, but we know its song. How beautiful is that? And that is the power of words, that someday, maybe, that's my hope, that someday maybe some child is listening or humming this song, गुनगुना रहे हैं, then he finds something that inspires him, and that takes him or her to the heights, or blossoms into a great human being that serves this world. वो शब्द सार्थक हो जाएंगे, ऐसे मैं कह सकती हूँ. जी. एक तो इस गीत की सफलता के लिए, जो एकल के लिए आपने लिखा, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ. अब यहाँ से आगे कुछ आपकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मैं इसलिए भी उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि बॉस्टन में रहते हुए इन प्रोजेक्ट्स के साथ आप बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर बनी, लिरिसिस्ट बनी, फिल्म द इलीगल की बात करूं, हाफ विडो की बात करूं, उसके अतिरिक्त फर्स्ट लव फिल्म की बात करूं, और एक कश्मीरी फिल्म जहन में आती है, गाश. जब मैं पहले सोच रहा था कि ये गश तो नहीं है, लेकिन वो गाश था, आपने मुझे करेक्ट करवाया था. तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत करना चाहूंगा एक एक करके. ये सिलसिला जो फिल्म राइटिंग का बना, लिरिसिस्ट बनने का बना, इसकी प्रेरणा कैसे, कहाँ से मिली, और ये बचपन से ही मंशा थी कि आप कुछ इस तरह की चीजें लिखना चाहते हो? कुछ उसके बारे में मुझे बताइए. देखिए बचपन से ये था कि I was a good student, तो पढ़ाई लिखाई में ही आगे था, and then I did my degree in computers from Pune University. फिर मैं H1 के द्वारा यहाँ आई, and in fact New York is where I came for work. I used to work in Manhattan and live in New Jersey. And that's been my process that's my journey to come to US. तो मैं IT में ही थी काफी साल. जो writing है वो somewhere कहते हैं ना खाद ढलती रही, और my parents, my father himself is a writer, and जब मैं छोटी थी मुझे टेल ऑफ टू सिटीज, मुझे जब वो कौन सी दो शहर हैं भी पता नहीं था, तो वो पढ़ी थी हमने. हमारे यहाँ सुबह प्रॉब्लली हम गालिब का कुछ सुन रहे हो, भजन शायद बाद में सुन रहे हो, तो इस तरह का एक माहौल था ही. फिर ये भी हो गया कि जब when this exodus of Kashmiri Pandits happened, lot of relatives, all of us were staying together. तो जिंदगी का जो करीब से देखते हैं ना, then when you are in a situation where there are many other people living with you, so you either go out or you go inwards. I think that was my process of going inwards. I started expressing through writing. I remember मैंने जो पहली कविता मेरे पापा को दिखाई थी, I was probably 8 or 9 years old, and he said, or improve it. And then that poem got published at the age of 15 in the newspaper there. Then I moved here and I kept writing it, kept collecting. I never thought कि इसका गीत बनेगा या poetry बनेगी या किताब बनेगी. In 2010, after my son was born, my mother-in-law was visiting me, and then I was reciting some of these poems to her, and she and another friend of mine said, why don't you get it all together in a book? So it was through that
process and the support from my in-laws, in my husband as well. They said that just do this, get it all together, and then you can come back and work again. But during that time I realized that some of these can be converted into songs. है उसमें ऐसे धुन बन सकती है. My association with Renzo Films, with director Danish, who's also Kashmiri, is LA based and Kashmir based. We connected, and I realized that a lot of this can go into movies as songs. I also got an opportunity to write dialogues, which I did not even know earlier. So कहते हैं ना, you actually learn on the job. That's what happened with me. I mean, this is exciting. This is exciting that you learned on the job. और वो on the job में क्या होता है कि एक आत्मविश्वास जो है ना बढ़ता चला जाता है जब लोग उसे सराहने लगते हैं. और इन प्रोजेक्ट्स की एक विशेषता ये भी रही कि आप ही के द्वारा लिखे हुए गीतों को सोनू निगम, शंकर महादेवन, बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया. ये जब होने लगा तो एक तो ये जानूं कि किस कदर आत्मविश्वास आप में बढ़ रहा था, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी शब्दावली पर थोड़ा काम करने लगते हैं, अपने शब्दकोश में कुछ नई नई चीजें लेकर के आने लगते हैं. कुछ वो जानना चाहूंगा आपसे. और इन लोगों से क्या रिएक्शंस आपको मिले, सोनू निगम से, शंकर महादेवन, इंडस्ट्री के और लोग? मुझे मालूम है आप अपने मेंटोर्स में से एक गुलजार साहब को भी मानती हैं, तो कुछ ये फेस बताइए मेरे को. देखिए, द फर्स्ट वन जो हमने फिल्म के लिए हिसाब से बात करते हैं, तो जो पहला जो एक नज्म मैंने लिखी थी, शॉर्ट फिल्म थी, इन सर्च ऑफ अमेरिका, जो कैंस फिल्म फेस्टिवल में उस समय शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में सिलेक्ट हुई थी. 2014-15 की बात है. तो उसमें एक नज्म थी, तू जर्रा है, जिसे सोनू निगम जी ने रिसाइट किया था. एंड बिकॉज दैट फिल्म वेंट टू शॉर्ट कैंस, तो एक थोड़ा सा मुझे लगा कि अच्छा कुछ हो सकता है. उनको भी अच्छी लगी थी, उन्हें रिसाइट की. एंड ही एनकरेज्ड अ लॉट, एंड आई थिंक दैट एनकरेजमेंट, आई हैव डन 3-4 songs with him. I have seen that encouragement has still been there. So I think one of the best things is that a lot of these people have been open to working with newcomers. I have also found a lot of people of कहते हैं अपनी ट्राइब आपको बनानी पड़ती है. हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि ये वी कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू आवर कंट्री वेयर वी हैव कम फ्रॉम, पर ऐसा नहीं है. हम लोग एक्चुअली जब हाफ विडो में काम कर रहे थे, तो वी वांटेड टू हैव सम कश्मीरी पोएट्री इन दैट, एंड वी अप्रोच्ड लॉट ऑफ पोएट्स, एंड then I realized that director Danish said to me कि तुम ही क्यों नहीं लिख लेती, but I had never written in Kashmiri before. Right. मुझसे तो एक सेंटेंस भी ठीक से बोला नहीं जाता था. तो फिर वहां पे मुझे लगा कि लेट मी थिंक, एंड इफ आई कैन डू अ गुड जॉब देन विल कीप इट. तो वहां से कश्मीरी लिखना शुरू किया, एंड देन आई ऑफ कोर्स हैव पीपल दैट आर mentor me on Kashmiri poetry, so I got it checked by them and they said it's really good, you can use it. So वो एक प्रोत्साहन मिलता रहा. अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, at least in my case. I think that's what I would say. So इस तरह वो बढ़ता गया, और then I started reading a lot of Kashmiri poetry. We did more of such things. We did songs in Kashmiri, which I would have not thought of that in 2010 or maybe before that कि ऐसा कभी होगा भी कि I'll write in Kashmiri and it will be sung by, let's say, हर्षदीप ने गाया है या शंकर जी ने गाया है. ऐ सवेरे हमारा जो एक बहुत पॉपुलर गाना है, शंकर जी sang Kashmiri after बुमरो बुमरो. So many years later. So who would have thought about that? But it's so let me break these songs little by little, because I want viewers, especially the ones who are based out over here in United States, could really relate to these songs. इन गीतों की खूबसूरत बात यह है कि लिखा बहुत अच्छा है, संगीतबद्ध बहुत अच्छा हुआ है, और गाया तो खूबसूरत है ही. सोनू निगम और शंकर महादेवन, हर्षदीप ने उन गीतों के बारे में कुछ बात करते हुए, देखिए अब फिल्म ने एक लिमिटेड लोकप्रियता प्राप्त करी क्योंकि वो फिल्म फेस्टिवल के दायरे तक ही सीमित रही, मासेस तक नहीं पहुंची. लेकिन जिन जिन लोगों ने उन फिल्मों को देखा उन्हें सराहा, लेकिन गीत बहुत लोकप्रिय हुए. मैं बात सोनू निगम द्वारा गाए हुए गीत कुछ बाकी है कि करना चाहूंगा. बहुत खूबसूरत गीत, लिरिक्स बहुत खूबसूरत. तो कुछ उस कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, कुछ बाकी है के बारे में, तू जरा है उसके बारे में कुछ बताइए. वो जो गीत है कुछ बाकी है, वो सोनू निगम जी ने कंपोज भी किया है, एंड सो दैट्स
I feel one of his best. Obviously, I'm biased towards it. I have no problem saying that. I also liked his recitation of Jonas Sonpan that we released last year again on Kashmir, shot in Kashmir. तो वो भी बहुत खूबसूरत है. एज आई थिंक शंकर जी के साथ कोलैबोरेशन भी बहुत ही अच्छी रही, बट वो जो कुछ बाकी है, इट वाज ऑन हाफ विडो, इट वाज फॉर द हाफ विडो मूवी. उसमें एक्चुअली एक ही हिंदी गाना है जो कि वो गाना है. उसमें यही था कि वो कैरेक्टर की एक इट वाज बेसिकली टॉकिंग विद द जर्नी ऑफ दैट कैरेक्टर, कि कुछ बाकी है. कभी कभी हमें लगता है हाफ विडो, द टॉपिक और द टाइटल इटसेल्फ टेल्स यू अबाउट हाफ विडोज, बट इट आल्सो टेल्स यू दैट अबाउट पीपल दैट वी थिंक दैट एक लेबल लग गया तो अब हो गई इनकी जिंदगी खत्म, पर जिंदगी में हमेशा लगता है कि कुछ बाकी है. सो इट वाज बेसिकली एन एम्पावरिंग सॉन्ग एंड इट सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुली. People can Google it and find it. But I wanted to come to the point where Illegal hai, it's available on Amazon Prime. People can see it, which was released in 2020, and it has Suresh Sharma. So it didn't get stuck into the film festival. It did get released properly, and it was actually accepted among the top 300. The Illegal was, yes, much in buzz, but I remember watching it at one of the film festivals actually. So that's how I kind of remember that. But I'm glad that the film you mentioned, it's on Amazon Prime, Right. and Suraj Sharma, of course, is a popular actor based here in the United States itself. So. Right. So that's interesting, and that was one of his good works, I would say. I won't say the finest, but one of his good works for sure. So we're talking about the songs. Then we had Aisa Savere last year that was released with Shankarji. Archana Kamath Hegdekar has composed it, and it's a duet. It has Soni Razanji and Taha Shah. It's about a Kashmiri Pandit woman returning home with her son. So it's a beautiful story, and that is the whole idea, that we want to make sure that the director that I'm collaborating with, he is also a perfectionist. We try to make sure that every creation that we bring about is not just to get millions of views. We Right. want that as well, of course. But at the same time, did it contribute something to some cause, or maybe did we bring a new word? As a lyricist, I try to do that. Did I bring a new word? Because I'm also learning as I'm writing. So her project mein I try to see that if I'm repeating my words, then it means that I'm not reading enough. So I try to check myself as well with every creation that we do. We were talking earlier about Anuradha ji. So she had actually challenged me one time, and we did this song called Tattoo. She said, I want you to write item number, as they're called. So we did for her album called Jaan Meri, we did an item number also called Tattoo. So I've written that as well. So great. ये जो आपने कहा ना कि आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं कुछ नए शब्दों को लेकर के आई या नहीं, अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं ज्यादा पढ़ नहीं रही. इससे जुड़ा कुछ दिलचस्प सवाल मेरे जहन में है, लेकिन वो ब्रेक के उस पार. विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस. Sunayana, once again, welcome to the program. ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया था कि भी मैं कुछ शब्दों को दोबारा से रिपीट तो नहीं कर रही, कुछ नए शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ या नहीं, और उसको लेकर के आप बड़ी कॉन्शियस हैं. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कई लिरिसिस्ट से पिछले दिनों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही उम्दा लिरिसिस्ट कुमार जी से बात कर रहा था, और कुमार जी ने बहुत सारी फिल्मों के गीत लिखे हैं, सुपर हिट गीत लिखे हैं. और जब मैं उनके बारे में पढ़ता चला गया, इंटरव्यू करता चला गया, तो रियलाइज हुआ यार इतना काम किया उन्होंने, और बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि कुमार जी कौन है और किस तरह के गीत उन्होंने लिखे हैं, उनकी शुरुआत पंजाब से कैसे हुई. और एक सवाल मैंने उनसे यही पूछा था कि कई बार ऐसा होता है कि काम में लोग बाग इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उनका एक फेज के ऊपर काम बड़ा रेपिटेटिव लगने लगता है, और वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम से ब्रेक नहीं ले पाते और अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पाते. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी इन एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड. How would you explain that situation? Although you're at a very early phase of your career, but at the same time, you've also been writing for a long time. आप
अब करीब करीब 10-15 साल से अधिक हो चले हैं कि आप प्रोफेशनल राइटिंग करती चले आ रही हैं, किताब लिख रही हैं, लिरिक्स लिख रही हैं, फिल्म राइटिंग कर रही हैं। इस बात को किस तरह से समझाएंगी उन उभरते हुए नए लेखकों को, और कि नए नए शब्दों का प्रयोग करना कितना जरूरी है? जो प्रॉब्लम कुमार जी की है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम येट. एज यू सेड दैट यू नो ही इज इस रास्ते में, वो हम एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, पर उसमें कहीं वो आगे हैं मुझसे. Yes, it's a very normal problem. जब आप लिखते रहते हैं तो you get into a certain kind of rut in writing as well. It happens to all of us. What I think, instead of me telling the young writers, I think I try to associate and meet as many young writers as possible. क्योंकि वो raw है, हमें वो rawness चाहिए. वो नए नए वर्ड्स बोल रहे हैं, हमें वो चाहिए. आई टॉक टू माई सन ऑल द टाइम एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल बच्चे क्या बोल रहे हैं. क्या हम, जैसे हम कहते हैं कि साहिर साहब ने लिखा था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तो वो उस टाइम का ब्रेकअप सॉन्ग था. पर अमिताभ भट्टाचार्य ने कहा कि दिल पर पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, मेरी सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. क्योंकि आज यही लैंग्वेज है नई जनरेशन की. तो ये आप, जैसे हम कहते हैं कि वो जनरेशन, ये जनरेशन, पर आप मीट पीपल लाइक गुलजार साहब एंड यू कांट से दिस दैट जनरेशन बिकॉज ही इज फ्रॉम दिस जनरेशन, राइट. तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि आज की जनरेशन या हर जनरेशन में रेलेवेंट रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, जिंदगी से कनेक्टेड रहते हैं. तो वंस दैट हैपेंस, you are always connected to the pulse, the pulse. कुछ लोग सतह पे रहते हैं, कुछ लोग नब्ज पकड़ते हैं. तो नब्ज पकड़ना है तो आपको डुबकी तो मारनी पड़ेगी. Sometimes that is tough. जैसे हमने वो यम्बर जलो, एक गाना, Kashmiri song that became very popular actually in Kashmir, that I had written. So उर्दू है पर उसमें कश्मीरी वर्ड्स भी थे काफी. और यम्बर जलो एक्चुअली वर्ड नहीं है. यम्बर जल एक फ्लावर का नाम है. इट्स अ फ्लावर ऑफ स्प्रिंग एक्चुअली. अच्छा. So the first flower spring is called Yamburzal. So, but when I used that word, I said Yamburzalo, which I kind of took some creative liberty. But then now it's used as a word. A lot of people say that Yamburzalo. So that was something I kind of, बदमाशियां करते हैं lyricist कभी. तो उस समय वो मेरी उस तरह की कुछ हरकतें थी. But I do that all the time. And one of the ways when I travel, in India also, I try to go in the public transport, क्योंकि लगता है जिंदगी कहीं तो टकराएगी. यहाँ सुनैना, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, अब कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा था तो कि उन्हीं के इंटरव्यू में जो मेरी कुछ बातें हो रही थी, तो उससे कुछ दिलचस्प बातों को एक सवाल की तरह आपके सामने भी रखना चाहूंगा कि कुछ लोगों को बड़ा आसान लगता है कि अगर धुन मिल जाती है तो फिर उसके हिसाब से जो है वो लिख लेते हैं और चीजों को, लिखावट को अपने मीटर पे बिठा लेते हैं. अब आप नई जो है लिरिसिस्ट है, नई से मतलब हालांकि कुछ सालों से लिख रही है, लेकिन फिर भी 4-5 फिल्में पुरानी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सॉन्ग. लेकिन इसमें क्या होता है कि मेरा कहने का मतलब कई 100 गीत पुराने नहीं है, तो अभी कुछ चुनिंदा गीत हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं. सवाल मेरा आपसे ये है कि जब बुनियादी तौर पर या जब ये बेस बन रहा होता है ना, तो जिस तरह से आपकी बुनियाद बन जाती है उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. तो आपका कंफर्ट स्पेस क्या है? अगर धुन मिल जाए तो लिखने में आसानी होती है, या मुझे धुन नहीं चाहिए, मैं लिख लूं और उसके बाद म्यूजिक कंपोजर अपनी धुन बनाता रहे, अभी क्या आसानी है? Primarily I'm a poet, तो I think muse is what I would say. म्यूज क्या है? म्यूज कोई इंसिडेंट है या म्यूज धुन है? क्योंकि धुन भी म्यूज है एक्चुअली. तो अगर आप धुन को सुनते सुनते उसे मैरिनेट कर लें और उसके थॉट्स में, अपने थॉट्स में मैरिनेट कर लें, तो आपको शब्द मिल जाते हैं. देखिए, अगर हम मीटर की बात करें तो अगर आपने एक मिसरा लिखा तो वो भी एक्चुअली आपका एक फ्रेमवर्क फिक्स्ड है. अब उसे आप बाहर नहीं निकल सकते. अगर आप गजल लिख रहे हैं तो धुन भी वैसे ही एक फ्रेमवर्क ही है जो आपको सहारा दे सकती है. I have dabbled with both and I have found my comfort is not in this or that. It's just that what's leading me. धुन है तो एक आपको एक थोड़ा सा एक्चुअली फ्रेमवर्क थोड़ा आसान भी हो जाता है, because then you know कि जॉन कैरेक्टर्स पे अगर लिखे तो then you know what limitations or what
क्या दायरा है उसका, सो फ्रेमवर्क कहाँ पे है, तो वो एक आसानी भी हो जाती है. बट अगेन वो उसको आप पकाते रहिए. मेरा प्रोसेस तो वही है कि सुनते रहिए, सुनते, wherever आई एम ड्राइविंग, आई एम क्लीनिंग, आई एम लिसनिंग टू द ट्यून, एंड ट्यून इज द म्यूज. इट कैरीज Right. यू एंड हेल्प्स यू. एक दोस्त की तरह कहती है, अरे चलो चलो, बस आ रहा है वर्ड, आ रहा है, तुम चलते रहो. Right. And sometimes it helps. So Yeah. that's You how. know, often a lot of writers avoid writing some tough words in their writings, thinking about that whether the viewers or the listeners would be able to understand them or would resonate with them or not. So they start looking forward for some easy words. आसान शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं. And some take it as challenge that, you know what, I'm not going to be compromising with easy words. I'm going to use a word which should be used and rather increase the intellect of my listeners or my readers. What is your approach? So my approach again is, if it's an independent song, that my liberties are a little different compared to for the film. अगर मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि जो गोलमाल फिल्म का गाना है ना, जिसमें वो एक दिन सपने में देखी सपनी, तो मैं सोच रही थी कि देखिए लता जी इतनी बड़ी कलाकार हैं कि गुलजार साहब ने शब्द का जेंडर भी चेंज किया उसके लिए कि सपनी, लता जी है तो सपना नहीं हो सकता, सपनी होगा. So these are the interesting things that as a lyricist you can still do if you are in a good collaboration with the music director. But specifically, let's say about your own writings that, in the while writing short stories or even writing poetry, do you look for some simple, easy words that the young generation or even the seniors around, the elders around, they could connect with it, or do you still go ahead with a word that should be used over there, that sinks in well with the thought that you're trying to put together? Yeah, I think when I'm writing, I'm not trying to impress anyone. I'm not thinking who will it attract or not. I'm just being honest with the thought. Unless, I was thinking about संदू को मैं मेरे अच्छे काम, कितने दिनों बाद हमने वो शब्द सुना, वो कितना ब्यूटीफुली बहा भी इस गाने में. तो इस तरह I think that's the same thought I have, that I'm not thinking that this word is outdated or this word I can't use. Whatever fits there, whatever comes naturally to me. If it is tough, it may not be tough, but if it is an old word or new word, I don't think about that. I feel that इसमें क्या बह रहा है ठीक से, क्या thought को properly express कर रहा है, तो I use that word. Sometimes music directors say that, I had a line where I had used almari से गिरा हुआ खत, and then the music director said, do we really need that? So I kind of sometimes have to fight for my words. So I'm okay with that as well. मैं यहाँ अब जिक्र करना चाहता हूँ वो कश्मीरी लोकगीत का भी. अब जैसा कि मैंने कहा कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों ने सुने नहीं होते हैं, लेकिन उनको सुनने में मजा आता है और लोगों की भी वोकैबुलरी में एक नया वर्ड जुड़ जाता है और गीत जुड़ जाते हैं, धुन जुड़ जाती है. इस गीत में भी कश्मीरी गीत जो कश्मीरी लोकगीत गायक नूर मोहम्मद ने गाया, उसने भी खूब लोकप्रियता प्राप्त करी. कैन यू टॉक टू अस अबाउट दैट सॉन्ग? Yeah, that's really interesting. Actually, that song is very interesting because उसका नाम जो टाइटल है बलिए है. It's an endearment that you use for a dear one. जैसे बलिए बोलते हैं पंजाबी में probably, so something like that. So उसकी जो नूर मोहम्मद जी is a folk singer, very popular folk singer, Kashmiri folk singer. It is my honor that he sang that my words, but उसमें actually it's a very interesting experiment we did that. उसमें 4 वर्सेस हैं गाने में. पहले 2 वर्सेस हमने एक पुराने पोएट हैं जो बहुत ही लोकप्रिय अच्छे पोएट हैं, शाहबाज सब, उनका लिया और उसको मैचिंग मैंने 2 वर्सेस लिखे, उसको हमने मैच करके we created that song. It was again challenging for me because अब already जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक फ्रेमवर्क रेडी है ऑलरेडी, सो आई कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट. अब इसमें मैं क्या क्या चीजें ला सकती हूँ, इसमें रूमी भी आ सकता है, उनकी कुछ जो मैंने पढ़ी हैं, या हमारी कश्मीर की पोइटेस हैं ललेश्वरी फ्रॉम 12th-13th सेंचुरी, उनकी कुछ थॉट प्रोसेसेस क्या मैं री इंटरप्रेट करके डाल सकती हूँ. सो आई थिंक अबाउट दोज थिंग्स, आई गेट इनटू दैट जोन. बट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, एंड the best compliment I'll tell you about that song that I received is that when I shared those lyrics with my father, he did not realize that I have written the last 2 verses. He thought interesting. It was the same poet. Yeah. So I'm sure he must be really proud of you, and you must have felt
so excited about the fact that your father has appreciated. क्योंकि देखिए बाहर के लोग जो अप्रिसिएशन करें वो तो ठीक है, वो तो अच्छा लगता ही है, लेकिन कोई अपना जिसके सामने आप पले बड़े हों, जिसने आपकी सूझबूझ को देखा हो, वो अगर प्रशंसा करे तो लगता है कि हाँ भाई कुछ तो बेहतर हो रहा है. हाँ, एक प्राइमरीली उस गाने के लिए मुझे अप्रिसिएशन इसलिए लगी बिकॉज ही एक्चुअली said that these are very good words and he thought that all the 4 verses are from the same poet. So I later told him the last 2 verses are mine, and he just looked at me and he was like, okay, very good. So from that perspective, I thought that was one of the it was a good compliment, and I think yeah. Well, great. Keep up that good work. We're going to take another short break over here. On the other side of the break, I've got some more interesting questions for you. We'll be right back after these messages. As we're in the last segment, I want to connect the dots, what we were talking in our first segment about your book, Sunny Side Up. I also understand that other than the Capitol Hill, while when you were recently in India, your book was read, reviewed, compliments were given by Shashi Tharoor and Paresh Rawalji. What was that like? So the book is actually reviewed by Shashi Tharoor ji, so it has his review. Also reviewed by Padma Shri Subhash Kagji, who's a scientist. And yes, of course. Kagji, yes. So, and Lopa Banerjee, she's an author herself and she lives in the US as well. So these are the people who have reviewed the book. When I was in India, it was released in Pune. My book was released officially by Dakkani Other Foundation. Monica Singh ji runs that organization. She's a poetess. And by Rajesh Reddy ji. I'm a big fan of his poetry. Who isn't? He's a wonderful poet, yeah. So, unhone release kiya. Then I went to Bombay for some of my work and I had the honor of presenting this book to Paresh Rawalji. And what a fabulous human being. What a fabulous human being. मैं हमेशा ये उस मीटिंग की यही बात मुझे याद रही कि I went to meet Paresh Rawalji by I met a human being. Interesting. Wow. So it left some good impact on you, some lasting, impression that you have with you. यहाँ एक चीज और के कई बार ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर भी आपने जिक्र किया है कि बहुत अच्छे तरीके से आप प्रभावित रही हैं और एक गहरा जीवन पर प्रभाव रहा है गुलजार साहब की लेखनी का आपके जीवन पर, जो दर्शक नहीं जानते हैं, जो इस कार्यक्रम को अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइए कि आप गुलजार साहब के लेखन को किस तरह से देखते हैं और जब भी आप उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मिली हैं, क्या कुछ सीख के आई हैं? गुलजार साहब से मैं यही कहूंगी कि मैंने जो सीखा है उनकी कविताएं पढ़ के, उनकी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ के या उनकी फिल्में देख के, वो है कि अगेन वी वर टॉकिंग अर्लियर कि आप कितने कनेक्टेड हैं किसी कैरेक्टर से, कितने क्लोज हैं उस थॉट को, एंड कभी हाउ डू यू मोस्ट ऑफ अस समटाइम्स आर एट द सरफेस, एक सतह पे रहते हैं, पर वो सतह के अंदर जाते हैं. जैसे मैंने अर्लियर कहा कि नब्ज पकड़ लेना किसी बात की, तो वो नब्ज कैसे पकड़ते हैं किसी बात की, आप उनके कोई भी गीत में देखिए, किसी भी कविता में देख लीजिए, जब वो नब्ज पकड़ते हैं देन यू आर लाइक वाह भी होता है पर भी होती है. तो वो जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको उनकी कविताओं में, उनकी लेखनी में दिख जाता है. सुनैना, हमारी बातचीत अधूरी रहेगी अगर हम फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र ना करें. एक बार फिर से एक्सोडस का मुद्दा उभर कर आया है. कुछ जमीनी हकीकत को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है और इंसानियत को एक बार फिर से जागृत करने का प्रयास किया गया है. बतौर कश्मीरी पंडित ये सवाल दो नजरियों से कर रहा हूँ. एक राइटर, पोएट, ऑथर के नजरिए से आपने कश्मीरी गीत लिखे हैं, कश्मीरी फिल्मों के लिए आपने राइटिंग करी है और आपका अपना प्रयास रहा है, अपने स्तर पर रहा है. लेकिन ये एक पहलू. दूसरा ये कि आप खुद एक कश्मीरी पंडित हैं.
इस फिल्म ने जिस तरह से समाज को एक बार फिर से झंझोर कर रख दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है दिस इज आवर लिव्ड रियलिटी, राइट? सो जो हमारी लिव्ड रियलिटी है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अदर्स टू नो व्हाट हैज हैपेंड. हमें तो पता ही है हमारे साथ जो, इवन विद माय बुक, और जैसे मैंने आपको बताया अर्लियर कि ए सवेरे हमने जो गाना बनाया था, उसमें मैंने अपने तरीके से वी ट्राई टू हाईलाइट दिस, बट इट्स नॉट ट्राइंग टू हाईलाइट, इट्स एक्चुअली समथिंग दैट इज has happened to us, right? So for us it's just a lived reality, it's a reiteration of that. Now it was time for others to see it, and that's how I see it. In fact, on that topic I would like to tell you that we last year, end of the year, we did shoot a short film in Kashmir called The Good News, which is based on the last year जो कुछ minority killings कश्मीर में हुई थी. It's based on that, and it's actually completed now. We just finished the post production and we'll be releasing it very soon, and it is an extension of the same conversation, and lot of these human stories have to be told, right? Not just in Kashmir, everywhere in the world. These human stories have to be told with utter honesty. And that is how I see this. And my first chapter in my book, Home and Homelessness, is about that. There are a few lines from a poem that I can probably recite here, that in my I was actually, you know what, while closing up, while wrapping up the conversation, exactly, as in you read my mind, I was about to tell you, or request you rather, for the same thing, that we started the conversation with Sunny Side Up, and shall we wrap it up? If you could read a few lines, of some of your poetry, and if that be home and homelessness, let's do that. Okay, so sure, we can do that. There's a poem, I'll just read a few lines from that. It's called Please. What Will Quench My Thirst for Thee? In my left pocket, I have a worn-out old taweez made by a fakir who sat by the chinar trees. I do not wear it for the fear of being found. I walk, walk, walk till I am never homebound. I saw Lalded, Laleshwari. I saw Lalded in my dream last night. She robed herself, she draped it tight. Moaning she came, silently she left, turned back and asked, when will it be enough? When will it be enough? Beautiful writing, Sunayana, and it certainly evokes emotions. I'm sure many individuals will be able to connect with, your mindset, your emotions, what you're trying to express through poetry. Once again, congratulations on all the very best for this, and all the best for your future endeavors as well. It was a pleasure interacting with you. Thank you so much, Vikas. And as you said, I'm a writer, poet, filmmaker, but I'm also a language activist. So in all of this, my biggest mission right now is to make sure Kashmiri language does not die. It's carried on through the tongues of people. So yes. जब तक आप लोग उससे जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ लेकर के आते रहेंगे, तो वो जिंदा रहेगी. ये कारवां चलते रहना चाहिए, ये बड़ी बात है. जी जी. आपने बातचीत करी, हमसे समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much.